So students, today we'll be doing three theorems. Okay, so one is basic proportionality theorem, then property of angle bisector, and then property of three parallel lines. So first we'll be looking at basic proportionality theorem. I'll not be teaching you the proof of this theorem, that we'll be doing it later after the chapter. So I'll be explaining you what exactly the theorem is and its application in the sums. So the statement of the theorem goes like this: if a line is parallel to one side of a triangle, and if that line it intersects the other two sides in two distinct points, then the line divides the side in the same ratio. समझो एक लाइन है, वो लाइन ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल है और वही लाइन उस ट्रायंगल के बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, तो ये कैसा है, जैसे कि समझो एक ट्रायंगल है ए बी सी. ओके, और ये ट्रायंगल में समझो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, समझो ये है लाइन एल. ठीक है, और ये लाइन क्या है, बी सी से पैरेलल है. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड बी सी. फिर क्या बोल रहा है कि इट इज इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. से दिस लाइन एल it intersects AB and AC. AB and AC are other two sides. बराबर, समझो AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है अलग अलग पॉइंट में से M and N. ओके, देन क्या दिया है, देन के बाद वाला पार्ट होता है टू प्रूव पार्ट. देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन सेम रेशियो. तो ये साइड्स को ये लाइन क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. तो ऐसा आएगा, अगर इफ लाइन L is parallel to side BC. अगर लाइन L साइड BC को पैरेलल है और अगर लाइन L इंटरसेक्ट कर रहा है साइड्स AB एंड AC एट पॉइंट M and N, देन क्या दिया है, देन द sides will be divided in the same ratio. means ये लाइन L AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, AB अपॉन MB, और AC को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, AN अपॉन NC. सो जो रेशियो में ये लाइन AB और AC को डिवाइड करता है वो रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. तो याद रखना, अगर कोई भी लाइन एक साइड से पैरेलल है और अगर बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वो दोनों साइड का रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. दिस इज कॉल्ड एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ आई विल गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल्स. ये तुम लिख के ले लेना, ठीक है, और हम थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि समझो से मैंने एक ड्रॉ किया एक ट्रायंगल. समझो ये ट्रायंगल है XYZ. ओके, और समझो एक लाइन है, समझो PQ, जो क्या है XY से YZ से पैरेलल है और XY और XZ को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे. तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या आएगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम XP अपॉन PY, ये साइड का कौन सा रेशियो आएगा, XP अपॉन PY, और ये साइड को ये पॉइंट कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, XQ अपॉन. So XP upon PY will be equals to what, XQ upon QZ. So you remember, for this triangle XYZ, say PQ is parallel to XY. For triangle XYZ, PQ is parallel to XY, and this PQ is intersecting XY and YZ at point P and Q. So by basic proportionality theorem क्या आएगा, XP upon PY will be equals to XQ upon QZ. We can look at one more example. Okay, say now if you consider this triangle STU, you have XY parallel to TU. Okay, if a line is parallel to one side and if it is intersecting other two sides at two distinct point X and Y, then by basic proportionality theorem क्या आएगा,
बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, Sx अपॉन xt। समझ में आ रहा है? ये लाइन जो है बाकी दो साइड क्या इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा Sx, ये xt विल बी इक्वल्स टू Sy अपॉन yu। ओके, समझ में आया? अब हम लोग करेंगे एंगल बाइसेक्टर। सो नाउ विल बी सीइंग चिल्ड्रन converse of basic before looking at property of angle bisector, we'll be seeing converse of basic proportionality theorem. Converse of basic proportionality theorem. Converse means जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम देखा था हम, जस्ट उसका उल्टा। ओके, इसका स्टेटमेंट इस तरह है। द स्टेटमेंट सेज दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides in same ratio, then the line is parallel to the third side. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम में हमने क्या देखा था? इफ द लाइन इज पैरेलल देन द टू साइड्स विल बी डिवाइडेड इन सेम रेशियो। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम क्या बोलता है कि इफ द लाइन इज डिवाइडेड इनटू टू, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स इन इक्वल रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जैसे कि समझो, इफ देयर इज अ ट्रायंगल, ओके, से इफ L इज अ लाइन, द ट्रायंगल इज ABC, एंड हियर इफ से दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट N, तो इधर क्या रहेगा? इफ AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन NC, मीन्स अगर दोनों साइड इक्वल रेशियो में है देन लाइन L विल बी पैरेलल टू साइड BC। समझा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम में इसका उल्टा था कि अगर लाइन पैरेलल है तो ये दोनों साइड का रेशियो सेम रहेगा, लेकिन कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में क्या है कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या रहेगा? एक दूसरे से पैरेलल रहेगा। ठीक है, सो दिस इज you write this also in your notebook. Now we'll be seeing angle bisector property. Now according to this property, the statement says that the angle bisector of a triangle, कोई भी एक ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर, it will divide the side opposite to the angle in the ratio of remaining sides. समझो एक ट्रायंगल है, ये है समझो ABC, और ये ट्रायंगल में समझो AM एंगल बाइसेक्टर है। ओके, AM is the angle bisector of angle A. Then according to this property, the side opposite to the angle, that means angle A का opposite side क्या है? BC, उसको ये एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है इन सम रेशियो। क्या है वो रेशियो? BM अपॉन MC, बराबर। ये एंगल बाइसेक्टर उस एंगल के ऑपोजिट साइड को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो रेशियो किसके साथ इक्वल रहेगा? इट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। व्हाट आर द रिमेनिंग साइड्स? AB and AC. सो BM अपॉन MC विल बी इक्वल्स टू व्हाट? AB अपॉन AC. Okay children, so if AM is angle bisector then the side opposite to AM, which is the side opposite to angle A, the side opposite to angle A is BC, then the side opposite to the angle is divided in what? It is divided in the ratio of remaining two sides. So BM upon MC, ये एंगल का ऑपोजिट साइड BC का रेशियो क्या है? BM और MC, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। समझ में आया? और एक एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे कि समझो यू हैव अ ट्रायंगल, से द नेम ऑफ द ट्रायंगल इज PQR, और समझो एंगल Q का एंगल बाइसेक्टर है QT। ओके, एंड दिस एंगल बाइसेक्टर QT है, तो बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या आएगा? इस एंगल का ऑपोजिट साइड क्या है? PR, उसका रेशियो क्या आएगा? PT अपॉन TR, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स।
So PT upon TR will be equal to PT upon QR, PQ upon QR. और एक याद रखना, अगर मैंने PT लिया ना तो ये साइड P से ही लेना है तुमको, ठीक है। अगर समझो मैंने RT अपॉन TP लिया तो तुमको रेशियो क्या लेना है, RQ अपॉन PQ। तो जहाँ से स्टार्ट करते हो वहाँ से ही साइड का भी रेशियोज ले लो, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि समझो STUV, समझो TV एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल बाइसेक्टर का ऑपोजिट साइड क्या है, SU। तो SU का रेशियो क्या रहेगा, SV अपॉन VU, दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। रिमेनिंग टू साइड्स क्या, एक है ST और UT। अब लेना क्या है, UT अपॉन ST लेना है कि ST अपॉन UT लेना है, वो तुमको डिसाइड करना है। तो तुमने यहाँ पे रेशियो S से स्टार्ट किया ना, SV अपॉन VU, तो रेशियो क्या लेने का, ST अपॉन TU। गेटिंग? सो दिस इज विच प्रॉपर्टी, दिस इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस। ये तो तुमने स्टैंडर्ड 8th पे भी देखा है, ठीक है। सो नाउ विल बी सीइंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स made by 3 parallel lines. Now what this property says, the property says that the ratio of intercepts made by three parallel lines on one transversal is equal to the ratio of intercept made by the same parallel lines on the another transversal. So say if there is a transversal, say I say X is a transversal and there are 3 parallel lines, say these parallel lines are A, B and C. So A, B, C, whenever it will intersect transversal X, say if it intersects at point P, Q and R. So what is the transversal? So what is the intercept formed here? It's PQ and QR on the first transversal. So the ratio of these intercepts will be equal to the ratio of intercepts which are formed by another transversal when these parallel line meets. Say Y is another transversal, and if this parallel line is meeting another transversal, say at point M, N and P, then the ratio of intercept on this transversal will be equal to what? The ratio of intercept on another transversal. This you have already learned in your standard 8th, property of intercept made by 3 parallel lines. Okay, the intercept formed by 3 parallel lines on the first transversal will be equal to the intercept ratio of intercept formed by the same parallel lines on another transversal. Okay children? So children, now we will be doing practice set 1.2. Okay, so have a look there. The question number 1 says that given below are some triangles, identify in which figure ray PM is the bisector. Okay, children, there is one more property that is called as converse of angle bisector. Converse of angle bisector. According to this property, say if this is ABC
and this is point M. तो हमने क्या देखा था, एंगल बाइसेक्टर अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी BM अपॉन MC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC इफ AM इज एंगल बाइसेक्टर. अब यहाँ पे कन्वर्स में क्या आएगा, इफ BM अपॉन MC, if the opposite side, if the ratio of the opposite side is equal to the ratio of remaining two sides, then AM is what, angle bisector, right? So this is converse of angle bisector property. So based on this property, we'll have to check whether the figures, the ray in the given figure is angle bisector or not. Okay, so we'll be doing question number 1. Have a look there. First question. So this is M, this is R, this is Q, and this is P. This is 7, 3, this is 1.5, and this is 3.5. So here we need to identify whether PM is angle bisector or not. So how I'll do my solution is, see, first I'll find the ratio of QM upon MR. This is QM, this is MR. QM is how much? 3.5. MR is how much? 1.5. So I multiply it by 10. So QM upon MR will be equals to, I'll multiply it by 10. So this becomes 35 upon 15. Okay. So 5, 7 5s are 35 and 5 3s are 15. So QM upon MR is 7 upon 3. I give this as number 1. Then after finding QM upon MR, you find QP upon PR. So QP upon PR is already given to you as 7 upon 3, number 2. So I'll write from 1 and 2. I have QM upon MR is equals to QP upon PR. Therefore, by converse of angle bisector property, what do you have? PM is angle bisector. Okay children, and if it is not equal, you will write by converse of angle bisector property, PM is not the angle bisector. So I have done the first sum. Say, now look at the second sum. R, P, Q. This is 7, this is 10, this is 8, and this is 6. So I need to show PM is angle bisector or not. तो सबसे पहले मैं क्या करेगा, RM अपॉन MQ का रेशियो फाइंड करेगा, 6 अपॉन 8, नंबर 1. तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 3s are 6, 2 4s are 8, number 1. Then I have RP upon PQ, that is equal to 7 upon 10, number 2. So from 1 and 2, RM upon MQ is not equal to RP upon PQ. Therefore, by converse of angle bisector property, PM is not the angle bisector. So sum number 3 will be your homework. You need to do it. Okay. Now we'll be doing sum number 2. So sum number 2, children. See, the figure is, there's a triangle PRQ where N and M are points on sides. So यहाँ पे given, I'll write down. See what is given. In triangle PQR, PM is given to you as 15, PQ is given to you as 25, PR is given to you as 20, NR is given to you as 8. To prove, just to state whether line NM is parallel to RQ. This is, you need to prove it. Okay, and you need to give reasons. So how do I prove it? See,
I have PM as 15. I have PQ, the whole of PQ, as 25. Then I have PR as 20. And I have NR as 8. So first let me find, see, I need, you know that converse of basic proportionality theorem says if the ratio of sides are equal, then the line will be parallel. So first I need to find Pn upon Nr, is it equal to Pm upon Mq? So how will I find it? See, so first I need to find the value of Pn. I know that PR is equals to Pn plus Nr, but PR is 20, will be equals to Pn plus 8. So Pn will be equals to 20 minus 8. So Pn will be equals to 12 units. In the same way, what I'll do, I'll find MQ here. PQ is equals to, here you need to write down reason, children. P dash N dash R. Okay. Next is, you know that PQ is equals to PM plus MQ, P dash M dash Q, but PQ is 25, PM is 15, MQ I'll find. So MQ will be 25 minus 15. So MQ will be how much? MQ will be 10 units. So I need to prove whether NM is parallel to RQ. To prove NM is parallel to RQ, I'll find the ratio of Pn and Nr. Pn upon Nr will be equals to Pn is 12, Nr is 8. So this will be 4 twos are 8. Sum number 3, children. See what the question says. It says that in triangle MNP, NQ is the angle bisector and certain values are given to you. Mn is given to you as 5, Pn is given to you as 7, MQ is given to you as 2.5. You need to find QP. It's very easy. You need to apply angle bisector property and then solve. So I'll write in triangle MNP, NQ is angle bisector of angle N, therefore by angle bisector property. What angle bisector property says? It says that the angle bisector divides the opposite side. It divides the opposite side in the ratio of remaining two sides. तो अगर ये angle bisector है, वो opposite side का ratio क्या है? MQ upon QP. MQ upon QP किससे equal रहेगा? बाकी दो side के ratio से. Will be equal to Mn upon Np. Okay, but how much is MQ? MQ is 2.5. How much is QP? You need to find. Mn is 5 and Np is 7. So you have 2.5 into 7 will be equals to 5 into QP. So QP will be equals to 2.5 into 7 upon 5. 5 कितने सा 2.5? 5 0.5 सा 5 1 सा 5 0.5 सा. So QP will be equals to 3.5 units. Okay, children. Now we'll be doing the next sum. We'll not be doing the fourth sum. Now we'll be doing sum number, say, 8. Have a look at sum number 8. Why I am doing these sums? Because they are much related to each other. So see, so the name of the triangle is LMN, where Mn is 10 units, LM is 6 units, Tn is 8 units, and you need to find LT. So very easy, you need to apply the angle bisector property. Given will be in triangle LMN, ray MT
bisects angle LMN. MT bisects LMN means MT is angle bisector. LM is given to you as 6, MN is given to you as 10, and TN is given to you as 8. And what you need to find is, you need to find LT. Solution, you need not do anything, but you need to apply what? You need to apply angle bisector property. So how do I do it? See, first I'll write in triangle LMN, ray MT is angle bisector. So what an angle bisector does? It divides the opposite side in the ratio of remaining two sides. So I'll write by angle bisector property. What you have? You have LT upon TN. LT upon TN. अगर LT लिया तो LM लेने का, ठीक है? LT upon TN will be equals to LM upon MN. How much is LT? LT is, I need to find. How much is TN? 8. How much is LM? 6. And this is 10. So LT will be equals to 6 into 8 upon 10. LT will be equals to, now see, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 6 4s are 24 upon 5. So LT will be equals to 4.8 units. Okay children, because it's 5 4s are 20, what is left is 40. So you have 0.8, 8 5s are 40. So it's 4.8 units. Okay children. So sum number 9 will be your homework. Try doing sum number 9. Okay children. And then you will be doing sum number 6 also. Sum number 9, sum number 6 will be your homework. In both of these sums you need to apply angle bisector property. Okay children. So now we'll be doing sum number 5. Sum number 5. See, this is your figure. So this is AB, this is PQ, this is DC. So given is quadrilateral ABCD is a trapezium, and in this trapezium AB is parallel to PQ, is parallel to DC. The value of AP is 15, PD is 12, QC is 14, and what you need to find is BQ. See children, AP 15 है, PD 12 है, BQ ढूंढना है और QC 14 है, और 3 पैरेलल लाइंस है, और ये ट्रांसवर्सल कंसीडर कर सकते तो इंटरसेप्ट से. सो यहाँ पे यू विल अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. सो आई विल राइट सी quadrilateral ABCD is a trapezium wherein AB is parallel to PQ is parallel to DC. Therefore, by property of intercepts made by parallel lines and their transversals, by property of intercept made by parallel lines and their transversal क्या आएगा? The ratio of intercept made on the first transversal will be equal to what? The ratio of intercept made on the second transversal. Value substitute करो. 15 upon 12 will be equals to BQ upon 14. So BQ will be how much? BQ will be equals to 15 into 14 upon 12. So BQ will be equals to, now 14 and 12, which table? It goes in the table of 2. Okay, so 2 7s are 14, 2 6 are 12. Okay, so it's 15 into 7 upon 6.
So BQ will be how much? BQ will be equals to 7 5s are 30, 105 upon 6. So BQ will be equals to 6 1s are 6. So you have 45, 6 7s are 42. Then 3 is left, 6 5s are 30. So it's 17.5 units. You divide this, you get 17.5 units. Okay children, so this is your answer. So we have done sum number 1, sum number 2, sum number 3, sum number 5, sum number 8, and your homework is sum number 6 and 9. Okay children, even you can try sum number 7. So based on this, same way you have to do sum number 7. Okay children, see, sum number 7, you have this, right? This is BA, this is DC, this is FE. ये 4 दिया है, ये 8 दिया है, ये 12 दिया है, ये x दिया है. ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल है. तो क्या आएगा? बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, AC अपॉन CE विल बी इक्वल्स टू BD अपॉन DF. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो. ठीक है. सम नंबर 7 विल ऑल्सो बी योर होमवर्क. ओके. सो नाउ चिल्ड्रन we'll be doing sum number 4. Sum number 4. See, there's a triangle. The name of this triangle is ABC, wherein there is a line PQ, and this is 60 degree and this angle is 60 degree. So this is my given. So I'll write in triangle ABC, angle P is 60 degrees, angle B is 60 degrees. So to prove is AP upon PB is equals to AQ upon QC. अब ये कैसे प्रूव करेंगे? AP upon PB equal to AQ upon QC. अगर PQ और BC पैरेलल होता तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC. लेकिन यहाँ पे तो हमको PQ पैरेलल टू BC दिया नहीं है, तो हम लोग उसको पैरेलल प्रूव कर सकते हैं. तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, सी एंगल P इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, angle B is equals to 60 degree given. Therefore angle P is equals to angle B, but angle P and angle B are corresponding angles for lines PQ and BC. Therefore by converse of corresponding angle test, you have PQ parallel to BC. अब PQ और BC पैरेलल हो गया, और तुमको पता है कि when a line is parallel to one side, then it divides the other two sides in equal ratios. So by basic proportionality theorem, you have AP upon PB equals to AQ upon QC. Okay children, I hope that you might have understood all these sums. So except sum number 10, we have 10 and 11, we have done all the sums of this exercise. So you all make a note of this, send it to me through WhatsApp. I'll be uploading many other extra questions for you to practice. Okay, thank you, thanks a lot.